यह कहानी है श्री गोपाल वीरनाला की, जिसने अपनी सेवा के 2 दशकों में प्राप्त आईसीटी के ज्ञान और अनुभव के साथ शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया है। Technology playing a vital role in our daily life. It's affecting the way how we think, how we communicate, and how we learn. पिछले 20 वर्षों में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में कई डिजिटल पाठ तैयार किए हैं और कई उपकरण जो शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को उनकी कार्य कुशलता में सुधार करने और समय बचाने में मदद करते हैं। My ICT journey started in the year 2003. With the basic knowledge of computers and MS Office, I have prepared digital lessons. उन्होंने अपने छात्रों के लिए अपने विषय में डिजिटल पाठ विकसित किए और अपने जिले के सभी स्कूलों के लिए डिजिटल पाठ विकसित करने के लिए टीमों का नेतृत्व किया। उन्होंने जहां भी काम किया, वहां के शिक्षकों, अभिभावकों और दानदाताओं की मदद से स्कूल के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप, निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था की खरीदारी की। इससे डिजिटल क्लास चलाना आसान हुआ और विद्यार्थियों को अच्छे ज्ञान देने का मौका मिला। Digital classroom helped us to understand our subjects easily, and we are very happy to learn with digital lessons developed by our headmaster sir. Thank you. गोपाल वीरनाला ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है, जिससे आसानी से छात्रों को किताबें जारी करने और रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिली। यहाँ तक कि छात्र भी आसानी से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। We are using our library management system, which was developed by our headmaster sir. Now we can easily manage our library system and explore thousands of books. प्रतियोगिताओं के लिए छोटी प्रस्तुतियां देने के लिए छात्रों को कंप्यूटर का उपयोग करने में मदद की। छात्रों प्रश्नावली तैयार की और साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण किया और डेटा की व्याख्या की और प्रस्तुत किया। प्रस्तुतियों को बनाने के लिए स्टॉप मोशन एनिमेशन और वीडियो मेकिंग कौशल, कंप्यूटर की मूल बातें में प्रशिक्षण भी प्रदान किया। इससे उन्हें समूहों में काम करने और दूसरों के साथ सहयोग करने में और उनकी रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच लाने के लिए 21वीं सदी के कौशल को प्राप्त करने मदद मिली, जिससे उन्हें कुछ समकालीन मुद्दों से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इंडिया अगेंस्ट भ्रष्टाचार आदि विषयों पर वीडियो तैयार किए गए। इससे उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्कूल के लिए प्रोजेक्टर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क जैसे पुरस्कार जीतने में मदद मिली। छात्रों को क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने में मदद की, जिसने उन्हें अपने उच्च क्रम की सोच बनाने में मदद की। गोपाल जी ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भाषा सीखने वाले ऐप्स विकसित किए। इनसे तेलुगु, तमिल, गुजराती और लंबाड़ी भाषाओं में ध्वनि के साथ भाषाएं सीखने में मदद मिलती है। I have started developing the tools for my professional growth. Later, I have distributed all those tools to the teachers, school heads, which helped them to improve their work efficiency and save lot of time. उन्होंने क्विज कंडक्टिंग टूल विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल किसी भी स्तर पर स्कोरिंग फैसिलिटी के साथ किया जा सकता है। उन्होंने स्कूल प्रमुखों के लिए कई उपकरण भी विकसित किए, जिनमें शामिल हैं स्वचालित बोनाफाइड जनरेटिंग टूल, छात्र प्रबंधन उपकरण, परिणाम विश्लेषण उपकरण, शाला सिद्धि रिपोर्ट उत्पादन उपकरण, मिड डे मील की रिपोर्ट तैयार करने का उपकरण बनाया, जिससे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। मेजर आईसीटी एक्टिविटी। As a fellow math and self-motivated learner, I have been searching, researching and learning new things and acquiring ICT knowledge.
not only the basics of computers, but also acquired the knowledge in programming languages, graphic designing, web designing, apps development, web hosting, cloud computing, and all the latest technologies that come every day, and participated in the Innovative Teachers Leadership Award competition and won the award in the 2005, which gave me a chance to visit South Korea to study the educational broadcasting system there. When the pandemic corona stopped us to reach students, all my ICT knowledge and experience helped me to get those students out of that situation and continue their education without any barrier. मार्च 2020 में जब स्कूल अचानक बंद हो गए, जब सभी को महामारी कोरोना का डर सता रहा था, उनके मन में एक सवाल आया कि लॉकडाउन के कारण स्कूल छूटने वाले अपने छात्रों तक कैसे पहुँचे और शैक्षणिक वर्ष गवाए बिना वह क्या कर सकता था, वह उनकी मदद कैसे कर सकता है। जब वह उनके मन में यह सवाल उठा, तब वह अपने पूरे ICT ज्ञान और अनुभव, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के ITLA 2005 में इनोवेटिव लीडरशिप अवार्ड प्राप्त होने पर उन्होंने कोरिया में EBS एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का उनका ज्ञान, जिसका अध्ययन किया था, अब इस वेबसाइट को बनाने में मददगार हो सकता है। जैसे ही यह विचार आया, उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की और अपने स्कूल के लिए एक LMS वेबसाइट विकसित की और उन्होंने इस वेबसाइट पर डिजिटल पाठ तैयार करने और अपलोड करने के लिए अपने स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। जब छात्रों और उनके माता पिता को यह बताया गया, तो वे बहुत खुश हुए और इस प्रकार वह छात्र की शिक्षा को वर्ष के लिए बर्बाद होने से बचाने में सफल रहे। उसी समय मेडचल जिले में उनके कुछ दोस्तों के और मेडचल जिला शिक्षा अधिकारी के अनुरोध पर मेडचल जिले के लिए medchalbadi.com वेबसाइट विकसित की। रंगारेड्डी जिले के छात्रों के लिए rrbadi.com वेबसाइट विकसित की। उन्होंने इन वेबसाइटों के लिए डिजिटल पाठ तैयार करने और अपलोड करने के लिए लगभग 350 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित भी किया है। इसके अलावा इन वेबसाइटों पर वीडियो पाठों के अलावा मूल्यांकन के लिए H5P इंटरैक्टिव सामग्री के लिए एक मंच तैयार किया गया है और सभी शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है, ताकि न केवल इन दोनों जिलों के छात्र बल्कि राज्य भर के कई जिलों के छात्र और आंध्र प्रदेश के छात्रों ने भी इस वेबसाइट का उपयोग किया है। इन वेबसाइटों से केवल 6 महीनों में 10 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। This is the most satisfactory work in my life, to help lakhs of students in the pandemic situation. We are very much thankful to our headmaster Gopal sir for developing rrbadi.com website, which helped us to utilize lockdown period. In that app, we clearly understand the lessons. As a staff member working under V. Gopal sir was a wonderful experience. Especially during this pandemic situation, Gopal sir made interacting with students in online mode a success through rrbadi.com. Thank you. He is a dedicated teacher and an efficient headmaster. For the teachers of Medchal and Rangareddy district, Gopal sir has turned out to be the digital guru. విద్యారంగంలో కంప్యూటర్ వినియోగం, డిజిటల్ తరగతుల నిర్వహణపై నిర్వహించిన పరిశోధనకు గాను జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ అవార్డుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం తరపున ఎంపికైన శ్రీ వీరనాల గోపాల్ సార్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కంప్యూటర్ విద్య అందించడం కోసం సార్ గారి కృషి అమోఘం. సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో సహ ఉద్యోగిగా పనిచేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ప్రభుత్వ బడుల పిల్లలకు ఆన్లైన్ విద్యను అందించడం కోసం ఆది నుంచి తపన పడేటువంటి వ్యక్తి శ్రీ గోపాల్ సార్ గారు. పిల్లల బాగు కోసం నిరంతరం కాంక్షించే గోపాల్ సార్ గారికి ఈ అవార్డు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. Sir's efforts on ICT in school education is marvelous and proved teaching learning more efficient. His untiring work made teachers
digitally literate. He inspired students through his innovative techniques and tools. He motivated teachers to initiate and conduct extracurricular activities like quiz, national festivals by using ICT. ఎప్పుడైతే మేము 10th క్లాస్ చదువుకుంటున్నామో అప్పటి నుంచే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో డిజిటల్ క్లాసెస్ అని, డిజిటల్ లైబ్రరీస్ అని, కంప్యూటర్ క్లాసెస్ అని, సైన్స్ ఫెయిర్స్ అని ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనే సార్ ఎంకరేజ్ చేసేవారు. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ల ఇంట్రెస్ట్ని గుర్తించి వారిని చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు. ఇప్పుడు నా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీగా పనిచేస్తున్నాను. ఇదంతటికి కారణం గోపాల్ సార్ అని చెప్తాను. ఎందుకంటే మా స్కూల్ టైమ్స్లోని మా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని గుర్తించి మమ్మల్ని ఎంతగానో ఎంకరేజ్ చేసేవారు. దీనికి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గోపాల్ సార్. Often see ads on TV about few educational platforms which make visual lessons very interesting. All of us would not be able to afford this, but because of Gopal sir, we are now able to view lessons and visualize things through medchelbuddy.com. I have been conducting live sessions and preparing video lessons on my YouTube channel GV Tech Talks for teachers, school heads and for all those who want to improve their digital literacy. శ్రీ గోపాల్ సార్ గారు ఉపాధ్యాయులకు టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకోవాలి అనేటటువంటి సదుద్దేశంతో విండోస్, ఎక్సెల్, వర్డ్, పవర్ పాయింట్ లాంటి అంశాలపై ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఆన్లైన్ తరగతులను నిర్వహించడం ఎలా అనేటటువంటి అంశంపై కూడా ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. As a staff member working under V. Gopal sir was an excellent experience to conduct online classes. They were very nice to learn my lessons. Thank you to Gopal sir for developing MedChelBuddy website. Gopal sir developed many lessons and innovative tools which helped students and school heads and teachers. Especially the websites for MedChel and RR Buddy which he developed helped students a lot during the pandemic year to save their academic year. I wholeheartedly thank sir for giving me this opportunity, as because of the sir's efforts I was able to make the video lessons. And because of these video lessons, it is very much helpful to the students to learn not only during the pandemic but even in the present times. That is, the lessons are available anywhere, anytime. Gopal sir is one of the great workers of our Medchel district, not only for Medchel, all over Rangareddy. He is a wonderful person. Coming to the digital works and all, the training which has been given by Gopal sir was excellent. It has helped us to prepare digital classes, not only digital, even Diksha preparations for everything. His work was amazing. It helped not only the teachers, the staff, but also the students to develop and to enhance the future technology. Hope these type of teachers have to be encouraged by the government. Gopal sir is the icon in digital education. He has given many trainings through GV Tech Talks. His help and selfless cooperation helps the students and the teachers of our government sector in Telangana. Gopal sir is an able administrator, educationist, technologist, rather a humanist. पाठ के बारे में जानना चाहते हो अधिक से अधिक तो आप MedChelBuddy को एक बार खोल के देखिए। जी, MedChelBuddy। अब इस MedChelBuddy की मैं बात करती हूँ। इस MedChelBuddy की शुरुआत कैसे हुई? यह एक स्वप्न था जो वी गोपाल सर जी के दिमाग में आया और ये स्वप्न को उन्होंने साकार भी कर दिखाया। In the pandemic situation, all the schools suffered a lot and no physical classes. So, in that situation, MedChelBuddy.com helped our teachers and students a lot. I thank MedChelBuddy.com organizers, especially Gopal Garu, who is the backbone of MedChelBuddy.com. ICT ज्ञान का उपयोग कर सेवाओं के माध्यम से
श्री गोपाल वीरनाला जी ने साबित कर दिया है कि प्रौद्योगिकी दुनिया की सभी समस्याओं को हल कर सकती है। I strongly believe that technology can solve any problem of the world. Thank you.